फ्रेंड्स मु प्रदीप सर्वप्रथमे आपण को एग्जाम क्रैक को स्वागत जनाऊँगी। आज जो मैंने एएसओ रो हाईकोर्ट एग्जाम टी देइथिले सेमानंकर क्वेश्चन पेपर मु डिस्कशन करी कंप्लीटली आपणकर इंग्लिश रीजनिंग जते सारा आमर रही क्वेश्चन पेपर सब कुछ डिस्कशन करी। बर्तमान आम प्रथम इंग्लिश रो देखिबा आंसर की तापर आपणकर बिट बाय बिट आम अलग अलग आमर सब्जेक्ट रे सब कुछ देखिबा। तेणु निहाती भाव में आपण मान समस्ते वीडियो टी लाइक करदे निहाती शेयर करदे सांगसाथी मान सहित जहाँद्वारा कि आप सांगसाथी मैंने यार आंसर की जानीपारे। एवं आमर क्वेश्चन पेपर मुझे अलरेडी आपको सेंड कर देछि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जो मैंने देखी ना आम टेलीग्राम ग्रुप रे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और आंसर की मैच करेंगे। यही एग्जाम क्वेश्चन पेपर टी आपको बहुत हेल्पफुल कर जोटा कि आपंकर OSSSC कंबाइंड एग्जाम रोचे से एग्जाम पे आपको बहुत हेल्पफुल करिवो। तेणु निहाती भाव में आपण माने समस्ते जो माने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपरेशन करछन्ती निहाती भाव आपण माने क्वेश्चन गुडको देखंतु बहुत बढ़िया क्वेश्चन पड़ीथिला। आपण एएसओ रो टिके मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन थिला तथापि बहुत भलो क्वेश्चन रहिथिला। क्वेश्चन देखिबा पिला माने फास्ट गोटे आपन पेसेज रहिथिला एक नंबर क्वेश्चन गोटे पेसेज रहिथिला आपण पेसेज टी भलसे पढिबे। ठीक अछि पेसेज टी आपण पढि सला पर आपण माने आंसर गुडको मैच करि परिबे। देखंतु ए पेसेज रो क्वेश्चन पचाइथिला caterpillars cannot defend themselves because they dash। या राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि रही हैव नो क्लॉ और जॉ। राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द एक्सप्रेशन अदर्स इक्वाली इफेक्टिव डिटर्न्स मीन्स या मानेटा कौन पिला माने या राइट आंसर टी हम जोटा कि ऑप्शन नंबर डी हम या राइट आंसर मेकानिज्म व्हिच स्केयर एवरीवन इक्वाली वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द हिमालय कैटरपिलर यूजेस प्रोमिनेंट कलर्स टू डैश। या राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि वार्म द प्रेडेटर। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर वार्म द प्रेडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर्स बिकॉज दे आर डैश। या राइट आंसर टी हम जोटा कि इंडेबुल। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर इंडेबुल। ठीक अच्छे ये आम चारिटा क्वेश्चन पैसेज पुणी आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन है कि ओ यू स्पॉइल्ड माय बीस्ट सरी सी सेड ताने एक्सप्लेन करछि बा आपण दुख प्रकाश करछि ताने हबो कोन सी लैमेंटेड दैट ही हैड स्पॉइल्ड हर बेस्ट सरी। राइट आंसर टी ऑप्शन नंबर बी बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देखंतु ए होटेल्स इनहेबिटेंट्स आर एटा क्वेश्चन टी पचार पिला मान देखंतु ए क्वेश्चन टी पचार आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंस चेक ग्रामर यूजेस मेकानिज्म रिडंडेंसी पंक्चुएशन स्पेलिंग एंड स्टाइल एलिमेंट्स। बुझेला कि क्वेश्चन नंबर देछि 6 नंबर क्वेश्चन देखंतु ए ऑप्शन आई रे देछि ए होटेल्स इनहेबिटेंट्स आर ट्रांसिट they come and go and the population changes every night। ऑप्शन 2 रे देछि while collating the evidence in the murder case on observing a broken branch the forensic expert asked as to what was its purpose। ऑप्शन 3 रे देछि the executive said that the newspaper had committed libel when it called him a sinking no good corrupt incompetent overpaid laying incompliment moron। ऑप्शन 4 देछि our taxi driver paused briefly on the way to the airport in order to believe the driver of the car that had nearly forced him off the road। बुझेला कि एटा हमर राइट आंसर टी हबो केवल ऑप्शन नंबर 1 हबो राइट आंसर जोटा कि एटा हबो राइट आंसर ता माने ए हबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इट वाज सर्पेंटली रेदर देन जीनियस दैट लेड द आर्कियोलॉजिस्ट टू हिज ब्रेथटेकिंग डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ऑप्शन 2 देला व्हेन द रिच मैन गेव $1 million टू द म्यूजियम साइनिक said he was merely trying to buy himself a reputation as a cultured person। ऑप्शन 3 देला द accuracy of the new regime
had been a great boon for the economy of the teeny tropical kingdom. Option 4 है देला the Air Force debunked UFO sighting but million of Americans did listen. Right answer टी हबो यार ऑप्शन नंबर डी जोटा कि आई भी ओनली हबो हला आई भी ओनली हबो यार राइट आंसर ठीक अछि ना हमर एटा दीटा हबो राइट आंसर से हमर आई भी और थर्ड आई भी दीटा हबो ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी हबो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच इज स्पेल्ड करेक्टली कोटा स्पेल्ड है करेक्टली या राइट आंसर टी कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हला कि ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूएंस ऑप्शन नंबर बी हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the word given below is used to 4 different sentences. Choose the option that has been incorrect or inappropriate use of the word. 9 number right answer कौन होगा incorrect कोटा अच्छी भूल अच्छी कोटा option number C होगा right answer. The parents were worried because they felt their son was very cute and impatient. हला एटा हमरो भूल अच्छी कहीं ना एटा होची एट लाग बोर्ड लाग था कहीं ना एटा उठे हमरो cute आउ impatient टा हमरो कोन ऑपोजिट वर्ड ऑपोजिट में हमर गुटे पॉजिटिव गुटे नेगेटिव सेंटेंस व्यवहार करा होची नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा यार पचारची पिला माने कोन ना सिनोनिम पचारची हैला टायरू टायरू रो सिनोनिम कोन हबो टायरू रो राइट आंसर हबो कोटा टायरू रो राइट आंसर हबो जोटा कि एप्रिटेंस ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर तापरे सेंटेंशियस रो सिमिलर कोन हबो सेंटेंशियस सेंटेंशियस रो सिमिलर हबो जोटा कि मोरालिस्टिक ऑप्शन नंबर डी हबो एग्राउंडेड रो सिनोनिम कोन हबो एग्राउंडेड हबो हमर जोटा कि स्टैंडर्ड ऑप्शन नंबर सी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल रो सिनोनिम कोन हबो इनक्रेडिबल रो सिनोनिम हबो अनबिलीवेबल लिबर्टी रो सिनोनिम कोन हबो लिबर्टी लिबर्टी रो सिनोनिम हबो फ्रीडम ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर फ्रीडम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लिनिएंट रो ऑपोजिट पचाची लिनिएंट रो ऑपोजिट कोन हबो हॉर्स ऑप्शन नंबर डी हबो डेथ रो ऑपोजिट कोन हबो डेथ रो ऑपोजिट हबो जोटा कि अबुडेंस नेव रो ऑपोजिट कोन हबो नेव रो ऑपोजिट हबो जोटा कि हमरो सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन नंबर सी हबो मालिशियस रो ऑपोजिट कोन हबो मालिशियस रो हबो काइंड ऑप्शन नंबर सी हबो तापरे रोबस्ट रो सिनोनिम सॉरी ऑपोजिट वर्ड कोन हबो रोबस्ट रो ऑपोजिट कोन हबो ना एमासिकेटेड ऑप्शन नंबर बी हबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 20 नंबर क्वेश्चन डैश मैन रेन इन द स्ट्रीट ए कार हिट डैश मैन ए राइट आंसर कोन हबो ए राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए आउ द हबो ठीक अछि ताल राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ए आउ द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट डैश रोमांस इज ऑल द रोड दैट दे बिल्ट इन ब्रिटेन ए राइट आंसर हबो द रोमांस ऑप्शन नंबर डी हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज डैश फेमस साइंटिस्ट एंड आइंस्टाइन ओन डैश नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 आइंस्टाइन लेफ्ट हिज कंट्री एंड लिव्ड इन डैश यूनाइटेड स्टेट until he died in 1955 एटा आपनकर लास्ट कोन हबो द हबो द नोबेल प्राइज हबो एवं फर्स्ट हबो ए फेमस साइंटिस्ट हला ए द ताले ए द ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आर यू शॉपिंग फॉर डैश हेल्थ क्लब टू जॉइन सो you can get in shape, shop wisely. You could end up choosing dash wrong club and losing more money than pounds. ये राइट आंसर टी कौन हबो ना ए हेल्थ हबो एटा अपन एटा हबो द रॉन्ग हला ए आउ द हबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम लंडन डैश पेरिस द ट्रेन ट्रैवल लंडन डैश पेरिस एटी कौन हबो टू पेरिस हबो बुझे लगी डेस्टिनेशन जगह कौन हुए टू लगे टू पेरिस हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा वी स्टूड एट द बैक डैश द थिएटर
ऑफ द थिएटर राइट आंसर हम ऑफ द थिएटर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आई विल वर्क डैश 5 o'clock until 5 o'clock कौन हम until 5 o'clock ऑप्शन नंबर ए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा से पचार चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड इटालिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है लगे नियरेस्ट माने सिमिलर टाइप रो जोटा कि आपनकर कुआ जीवो हमर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहि परिबा ठीक अछि द एंटीडोल द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना सिमिलर वर्ड कहबा द एंटीडोल टू दिस प्रॉब्लम इज हार्ड टू फाइंड ए राइट आंसर कोन हबो जोटा कि माने हमर रेमेडी हैला रेमेडी फॉर अवर राइट आंसर सी अवर राइट आंसर बिकॉज ऑफ फैमिली फ्यूड ही नेवर स्पोक हिज वाइफ पेरेंट फ्यूड रो कोन हबो जोटा कि क्वारल ऑप्शन नंबर डी अवर राइट आंसर द आर्टिकल इन रिटेन इन वेरी लूसिड स्टाइल लूसिड माने कोन हबो एटा क्लियरली हैला क्लियर हबो ऑप्शन नंबर बी अवर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आपनकर पैसेज गुटे मध्ये आसी गला ठीक अछि ए पैसेज को आपण पढिबे केयरफुली तापर आपनकर आंसर मु आपन को जने देउची क्वेश्चन नंबर 30 रे कहछि द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज डैश राइट आंसर हबो द वांटेड अटेम्प्ट्स ऑफ एनी लेवल एजुकेशन ता 31 नंबर क्वेश्चन को जिबा द ऑथर एटीट्यूड टू सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन द साइंस इज डैश राइट आंसर हबो सुपरलेटिव ऑप्शन नंबर सी हबो द वर्ड palpably most nearly means राइट आंसर हबो obviously ऑप्शन नंबर बी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 34 द ऑथर ब्लेम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फेल्युअर टू इम्पैक्ट साइंटिफिक मेथड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट डैश lack of interest on the part of a student नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा if the author were to study correct education in science to see how things have changed since he wrote the piece he would probably be most interested in the answer to which is the following question here right answer habo can students apply their knowledge logically option number c habo right answer बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा astrology is mentioned as an example of a dash right answer habo something unsupportable to those who have observed the method of science next question को जिबा एटा पचारछि आपन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कोटा करेक्ट सेंटेंस अछि पचारछि हला कि देखिबे हमें देखंतु देयर इज नो डाइनिंग एंड द फैक्ट दैट tattoos are become more popular these days now there is no denial of the fact tattoo are becoming more popular every day now there is no denying the fact that tattoo is becoming rather popular today now there is no denying the fact that tattoo are becoming every popular each day ए राइट आंसर टी हबो कोन ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो यार राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज those who organize a business venture and assumes the risk for it या राइट आंसर टी कोन हबो ए सक्सेसफुल कोडा हबो या राइट आंसर A successful entrepreneur is someone who organizes a business venture and who assumes the risks for it. Now, the successful entrepreneur indicates people who organize a business venture and assume the risks for it. Now, a successful entrepreneur is someone who organizes a business venture and assume the risks for it. এটা কোন হবে রাইট आंसर এটা হবো ডি ঠিক আছে রাইট आंसर হবো ডি অপশন নম্বর ডি হবো রাইট आंसर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु ऑर्गेनाइज ए बिजनेस वेन्यूर एंड एज्यूम द रिस्क फॉर इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 38 नंबर क्वेश्चन अप्रोप्रिएट penitential policy aimed on the social reintegration of the criminal of the one of the most important factors while evaluating functioning of democracy is different countries ना appropriate penitential policy aimed at आपनकर aimed पाखर सब एट लागे ताले एटा मध्ये होबनी एटा मध्ये आपन मानकर एटा हेई पारे एटा मध्ये आपनकर होबन तान दीटा ऑप्शन भितर आपनकर मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो जे ऑप्शन नंबर बी होबो राइट आंसर
ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हम आम राइट आंसर कहीं देखो ऑप्शन नंबर बी ये हम एथिरे आपनकर एम डेट रही एटा आपनकर रोची कौन ना माने आपनकर जोटा कि हेल्पिंग वर्ब किंतु एटी एम डेट माने एम से एटी रही है तेणु एटी दुईटा सेंटेंस गोटे सेंटेंस दुईटा आमर माने कौन हेल्पिंग वर्ब रोची तेणु ऑप्शन नंबर सी हेनी ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वांट्स बट ए सिंगल गुड पीस ऑफ pottery of conducting the carbon dating test. Now the director of archaeological survey of India wanted but only a whole piece of pottery to conduct a carbon dating test. Now the director of the archaeological survey of India wanted but only one good piece of pottery to conduct a carbon dating test. Now the director of the archaeological survey of India wanted but one good piece of pottery to conduct a carbon dating test. ये राइट आंसर टी कौन हम ये राइट आंसर टी हम आमर ऑप्शन नंबर डी द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वांटेड बट वन गुड पीस ऑफ पोटरी कंडक्ट कार्बन डेटिंग टेस्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आपणकर डैन एट हार्टली because baked bean is one of his favorite dish. ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए बुझेला ये आमर कौन इंग्लिश टोटल कवर 40 क्वेश्चन या पर आम नहीं आसवा रीजनिंग मैथमेटिक्स जहाँ सब क्वेश्चन पड़ी सब गुड़िक आम डिस्कसन करदे ठीक अच्छे रही समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोटी आप निहाती भाव लाइक करूँ सांगसाथी मानक शेयर करूँ आ जो मैंने आम चैनल को नुआ आसुँच प्रथम थर पर निहाती सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु जहाँद्वारा कि आम जिते भी जहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपण सर्वप्रथम पहुँची पार ठीक अच्छे रोचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।